प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु आवतु माम् आवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम् तत्सयोरावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्ति मानुषेभ्यः पूर्णं दीवातु भेषजं सन्नो अस्तु दिवते सञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। सबको प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रमाकांत जी, हमारे अपना यहाँ के जो मंत्री है वांकी जी, काबिल गाँव साहब हमारे उसमें बैठे हैं, और यहाँ के जितने हमारा एरिया के एमएलए सबको मैं सादर नमस्कार देता हूँ। स्पेशल regards to Prashant Lokhande ji, Planning Commission, and Padmini Singh also, and whoever is here, to all the revered moms who are sitting on the audience, और सबसे जो प्यारे हैं, आज इतना दिन के बाद हमारा दिल भरा हुआ लग रहा है जिनको देख के। Our dear boys, alumni, the stage for you. और क्या बढ़िया मुहूर्त है। रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर में कभी भी alumni का गेट टुगेदर नहीं हुआ। This is the first get together of alumni। कैसे हो रहा है? गोल्डन जुबली में हो रहा है। कौन इनॉग्रेट कर रहे हैं? खुद चीफ मिनिस्टर आए हैं यहाँ अलुमनी सेशन में एक्सक्लूसिवली टाइम, क्योंकि कल जो प्रोग्राम होगा इसमें हम वक्त नहीं दे पाएंगे। तो मैं रमाकांत जी को अनुरोध किया था कि उसमें तो ऐसा बात है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा आपका वक्त देंगे। तुरंत देखिए हाउ मच इम्पोर्टेंस इज गिविंग टू यू, एंड आई थिंक एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको तो उसको कुछ करना पड़ेगा, आपको शायद एक शुभारंभ है। ये कैसा होगा क्या होगा हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग बताएंगे। और कुछ पुराने स्वामी जी लोग आए हैं, हमारा थोड़ा वक्त आज भी कम हो रहा है। मैं कुछ स्वामी जी को बोले थे कि स्वामी जी लोग आपके पास 3 मिनट का वक्त है, लेकिन 3 मिनट में 180 सेकेंड्स होता है, आप लोग 150 सेकेंड लेना और 30 सेकेंड हमको वापस कर देना। तो और कोई किसी को बहुत कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ। एक छोटा सा बोल रहा हूँ कि तब मैं मेघालय में था, मेरा ट्रांसफर हो रहा था। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यंग पीपल टू गिव मी फेयरवेल। और उसमें जब चीफ सेक्रेटरी थे एसी शेयरिंग अरुणाचल के हैं, अभी शायद उसमें एक सेंसस में उसमें पता नहीं मेरे को ठीक। तो वहाँ पे वो चीफ सेक्रेटरी थे। तो कभी उस टाइम मैं बोला था कि शायद आई एम मिसिंग द पीपल ऑफ मेघालय बिकॉज सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन आई हैव गॉट हियर। तो उसके बाद एसी शेयरिंग स्टेज पे थे, बोले स्वामी जी मैं अरुणाचली हूँ, मैं सुना आप नरोत्तम नगर जा रहे हो, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ आपको यहाँ बहुत प्यार मिला, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ आपको अरुणाचल से कम प्यार नहीं मिलेगा। अभी मेरा 4 साल हो रहा है, मैं आने के बाद पहले से मैं मिल रहा हूँ। मैं एक बात आप सबको बोल सकता हूँ, मैं देश भर में बहुत जगह में घुमा हूँ। कल शायद बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज बोल रहा हूँ।
have interacted with so many chief ministers. They are very kind, very friendly. I have said not like them. I can't do. रात को 11 बजे कोई मैं काम बोलता हूँ करके देते हैं चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन कॉमन मैन। तो मैं प्रार्थना करूंगा, दुआ करते जाऊंगा हमारे देश में इससे और कुछ मुख्यमंत्री बन जाए तो देश का हालत और कुछ हो जाएगा। सब लोग हम दुआएं करते हैं आप सबके लिए, और बाद में हम थोड़ा लोखंडे साहब के बारे में बोलेंगे और सबके बारे में जब टाइम मिलेगा। लेकिन आज मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, खाली आप लोग को मैं यही बोल रहा हूँ, ये हमारा बिगिनिंग है। 50 years रामकृष्ण मिशन, 75 years इंडिया से इंडिपेंडेंस, 125 years रामकृष्ण मिशन और 50 years नरोत्तम नगर, सारे मिला के, और उसमें इसका ड्यू इम्पोर्टेंस बड़ा है। अंकित जी आपको भी बहुत धन्यवाद, आप लेके आए ना, ठीक है। लेकिन आप वानकी जी उस बात खाना खिला रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, हमको नहीं बुलाया, आप लोग भी नहीं बुलाए। मेरे को पता नहीं, दावा देते थे हमारे अलुमनी वो थोड़ी देर बाद घुसेंगे यहाँ, तो आलू के अलुमनी उनको भी शायद खिलाएंगे, नहीं पता नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर को लेके जा रहे हैं। हमको कभी नहीं बोले स्वामी जी आप आएंगे क्या। जब ये अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं। और बहुत अलुमनी है, तापिर गाँव से अलुमनी नहीं है, लेकिन उनका बेटा यहाँ है नहीं, अच्छा वो कि तो अलुमनी है, वो अलुमनी का पिताजी है। ऐसा ही है हमारा परिवार। आप सब लोग को सबको नमस्कार, यहीं से करता हूँ, खत्म करता हूँ, हमने अगला प्रोग्राम करेंगे। धन्यवाद महाराज जी, सबको प्रणाम। Honorable Chief Minister and all the dignitaries on the dais and मेरे प्यारे students, स्वामीजीs and other invited guests. टाइम दिया है खाली 1.5 मिनट का, 50 सेकंड यहाँ हो गया, अभी ज़्यादा तो बोलने का टाइम नहीं है। मगर 45 साल से पहले मैं यहाँ आया था। जब मैं यहाँ आया एक स्पिरिट लेके आया था। उस समय में नया भारत आज़ाद हुआ था। वहाँ मैं गुजरात से आता हूँ, वहाँ आज़ादी का स्पिरिट बहुत ही था। और हमारे मन में यहाँ जब आया, और भी मीटिंग में बोला था, यहाँ मैं रिपीट करूँगा, तो हमारा स्पिरिट क्या था। एक हिंदी गान हम लोग बार गाते थे, न यहाँ नहीं, हमारे दूसरे जगह में। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये मेरे बच्चों के साथ में मैं आया, यही स्पिरिट से आया था। मगर ये नया कल्चर, उस समय में नया कल्चर आ रहा था, नई शिक्षा आ रही थी, नई संस्कृति आ रही थी, और पुरानी संस्कृति और पुरानी परंपरा से बच्चे आ रहे थे। फर्स्ट जनरेशन क्लैश ऑफ आइडियाज, और उसका क्या संघर्ष हो सकता है, जिसने सफर किया है वही समझ सकता है। बहुत सी सफलताएं हैं, बहुत सी मुश्किल है। वांग जी ने हम लोग को काफ़ी मदद किया। मैं जब चीफ यहाँ वार्डन था, तो मेरी जब भी समस्या थी तो मैं कुछ स्टूडेंट्स लोग का नाम अवश्य लेना चाहूँगा, और उसमें प्रधान है सुमन्याक महिया। फिर जो चीफ यहाँ पर अरुणाचल असेंबली में स्पीकर थे सेतोंग सेना, जब भी मुझे मुश्किल आई, ये स्टूडेंट्स और भी स्टूडेंट्स के साथ में मुझे जो हेल्प किया उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। विशेष करके मैं सुमन्याक के लिए बोलूँगा, उस समय में वही छोटी उम्र में उनका जो एक मैच्योरिटी, एक विजडम और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो नेक था, उससे मुझे बहुत आनंद हो रहा था। आज पूरे अरुणाचल में हमारे स्टूडेंट्स बहुत उच्च स्थान में है और अरुणाचल को प्रकाशित कर रहे हैं। कोई डीसी है, कोई चीफ इंजीनियर है, कोई सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है, और क्या
चीफ मिनिस्टर भी हमारे थे। तो रामकृष्ण मिशन का अरुणाचल प्रदेश को बहुत ही बड़ा अनुदान है और इस अनुदान में यहाँ की जनता ने हमको जो साथ दिया है, यहाँ की गवर्नमेंट ने हमको जो साथ दिया है, उसको कभी नहीं भूल सकते। आज का ये विशेष अवसर पर मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और भगवान श्री रामकृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि उनके सब और से उन्नति हो और अरुणाचल की उन्नति और बढ़ती जाए। और मेरा भारत महान में शीर्ष में ये देश खड़ा रहे। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद Alumni associate, not alumni association, alumni members, they are a pillar to any institution. We have seen in many of our Ramakrishna Mission centers, alumni is a force of strength. And today, my presence here is due to the alumni of Alumni School who made me to come and visit the alumni meet of the Narottam Nagar. See, that is the spirit. So the thing is, one thing today I convey myself, what are the spirit with which the alumni should be imbibed having come into the institution like Ramakrishna Mission? We follow. It's all given by Swami Vivekananda's basic teaching for one's own good and for the good of others, for one's own welfare and for the good of others. This is the thing, idea which Swami Vivekananda conveyed throughout all his lectures, writings, his contact, his works, his deeds and everything. Now the whole thing has been condensed in a sutra param. I am very particular that the alumni should imbibe these qualities. It is all in a sutra param. It was expanded by Swami Vivekananda. Education. You know the famous statement of Swami Vivekananda, which begins with the saying, each soul is potentially divine. I am not quoting it fully. How to become divine? How to convert ourselves from normal to divinity? It is through education. Education is the process by which one can develop the qualities of manly qualities, human qualities, and develop to the extent infinitely to the divine. The first sutra is Vidya Dadati Vinayam. Education makes you humble. Humble is not, humility is not cringing before others or going low. Again, Sri Ramakrishna is saying, that is, you become proud of the education or the learning you get from the world. The whole world is a school. Remember Swami Vivekananda saying, we come here to learn. We may learn not merely by education course, by everything, by every experiences, but we come here to learn who we are, what is our destination, what is our goal, what is our aim. This is the first thing, Vidya Dadati Vinayam. Vidya, Vidya Vimarsha Rupini. This Vimarsha Rupini is discrimination. Discrimination or sense of judgment between right and wrong, between good and not good, between essential and non-essential, between primary and secondary, between what is immediate and what is long-range habit. All these teachings are taken from the Gita and expanded in the Swamiji's ideas. The third quality is Vidya Shira Vrittihi. Vidya is that gives character. Even in the Chandi, the famous Devi Bhagavata, it is said, Durvritti Vritti Samanam Tavadevi Shiram. The greatest quality of any divine thing, divine being is even wicked thoughts and ideas can be converted into very good ones.
This is character formation. The last thing is Savidya ya vimuktaye. That is education by which you can solve your problems, you can solve all your obstacles. Remember this. These three things were beautifully condensed in the Swami Vivekananda's 4-5 books. One will have no time to read the complete works of Swami Vivekananda and digest everything or assimilate everything. So in brief, actually every student, every teacher, everyone who enters this life had to first study the thoughts on the education by Swami Vivekananda. Second book is Swami Vivekananda on India and the Problems. Third book is Memoirs of European Travel. Fourth book is, there are small books of less than 100 pages, East and West. The last thing is Raja Yoga. This is how we have been for the past 40 years since I am involved with students from LKG preparatory to primary school, secondary school, higher secondary school, college, postgraduate students. The study circle, Vivekananda study circle have been more influential than even the prayer. You follow? Because prayer, unless the boys imbibe that talent, which only the tribal boys have got. I have seen Alumni boys and Narottam boys, without being taught, they imbibe music naturally, between the music and arts and culture, they are expert. If you go to teach them, they will not learn, but they can, listening itself, they imbibe this. So such being the case, from my personal experience, I never had any problem with the students. Anyway, all my life, I was very, very strict in the sense I would not talk with people. But at least we develop the qualities what young people, students should invite, should learn. We must be very clear on that. Then only your love give all these things will work. You must be sure, you must imbibe these qualities of Vivekananda. And then only you can put it to practice. It will benefit the students, your own benefit, your own welfare, and the benefit of others. It is these ideas the students have to imbibe, and it's our duty to communicate this, show the way how to develop this. Then only real love will develop. So thank you very much. I remember, as I told the beginning, the alumni of this Alumni school have definitely made it because I was injured. I was not capable of even walking. But still, they told me, if you don't come to the Narottam Devmani function, we 2 people will come to Bangalore and take you. That made me surrender. I said, thank you very much. Remember these ideas, definitely you will be better. That is the result of education. You must be better every day. You must feel you have done better than what I have done. I must feel, you also must feel, every day you must feel that you are better than yesterday. Thank you very much. May the blessings of all the 3 divine personalities be on all his mind. Humble prayer for us. Honorable Chief Minister Ramakrishna, Honorable Minister Bangkilawang, Honorable MP Atil Gauri, Commissioner Planning, Government of Arunachal Pradesh. I think I'm the most happiest man today to see so many gathering of dignitaries and alumni, because I have been associating with this mission since the inception, that is in 1971. Before establishment of the institution, we had to go around a number of places, right up to Kuncha, and beyond Kuncha, to locate the better place.
But we have, after seeing all through the places, we came down to this place, Nagar, and Narottam Nagar were established in this place. The President of India, Jubilee came and he laid the foundation of this institution. And he spoke in English and I had to translate in our local language for the benefit of the local who were gathering here. And thereafter, of course, Prime Minister Indira Gandhi and Prime Minister Morarji Desai, all the dignitaries they have visited. So this institution is a very honored, special institution, because that is why the dignitaries have visited. The number of have visited. And we are there to see that so many alumni who are the students and they have now in different professions, very the high ranking officer and all. So this is. And today we are celebrating the 50 years of that this mission. So it has come long years, and it will go on more. And there will be a lot of blooming for different flower blooming among from the student. And then they will go to various professions. Some of them are minister, some of them are government officer, and all. So it's great to see all this. I all speak much. Thank you very much. Well, Chief Minister of Arunachal Pradesh, Adharniya Swamiji, Honorable Minister PH, Honorable MP, Honorable MLA, और यहाँ पे उपस्थित रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर के स्वामी जी और फॉर्मर स्टूडेंट और करंट स्टूडेंट। स्वामी जी बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ आज आपने जो हमारा रिकग्निशन किया है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इनफैक्ट जब से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया तब से मेरा एसोसिएशन अरुणाचल से रहा और मेरी शुरुआत यहाँ से हुई। और पहले ही दिन जब मैं यहाँ रिपोर्ट किया मैं आर्किबिशप ईटानगर गया था, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे करियर के पहले ही दिन मेरा आर्किबिशप के साथ एसोसिएशन रहा। और मैं इस एसोसिएशन से एक चीज़ मैंने सीख ली थी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, जिसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा, ये फुल्ली पेड सोशल सर्विस, और ये करने का जो मौका मुझे आरके मिशन और बीकेवी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने से मिला है। जहाँ तक अरुणाचल की बात है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा और कभी मैं एक्नॉलेज भी नहीं करूँगा कि मैंने कुछ ज़्यादा किया है या मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, क्योंकि ये सब फ्लो होता है यहाँ की लीडरशिप से। और यहाँ की जो लीडरशिप है, जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर है, इतने कमिटेड है सोशल कॉज के लिए। हमारे जैसे सिविल सर्वेंट्स को तो सिर्फ उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना है, और उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करते करते सोशल वर्क होता है। तो ये एक बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। वैसे स्पीच देने की मेरी प्रैक्टिस नहीं, इसलिए मेरे पास वर्ड्स कम पर है। स्वामी जी, हमारा घर और मंदिर दो जगह ऐसे होते हैं जहाँ हम चप्पल उतार के आते हैं, और यहाँ पे हम आज चप्पल उतार के आए बिकॉज ये मंदिर जैसा घर है हमारा। और इस मंदिर जैसे घर ने अरुणाचल की कितने जनरेशंस नर्चर किए हैं।
आज आरके मिशन की एल्यूमिनी मीट मतलब अरुणाचल की हूज हू की मीट है। इसमें से कितने लोग कितने बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं ये कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और आरके मिशन का अरुणाचल के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक कुछ गिने चुने सिविल सर्वेंट्स में हूँ कि जो अरुणाचल का ट्रांजिशन पिछले 20 साल से देखता आया हूँ, और इसलिए मैंने एक चीज़ मैं रिएटरेट करना चाहता हूँ जो ऑनरेबल सीएम साहब ने 10 दिन पहले युवा सम्मेलन में कहा था कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। पहले हमारा देश, फिर हमारा स्टेट, फिर हमारा ट्राइब और फिर मैं। ये जो मैं सर आपके परमिशन से मैं रिपीट करना चाहूँगा, और इसका थोड़ा मैं उल्टा भी करना चाहूँगा कि देश ने मेरे लिए क्या किया ये नहीं सोचना है, मैंने मेरे ट्राइब के लिए क्या किया, मैंने मेरे स्टेट के लिए क्या किया और मैंने मेरे देश के लिए क्या किया। ये प्रायोरिटी हमने रखनी चाहिए। दूसरा, जो पिछले कुछ सालों में अरुणाचल में डेवलपमेंट 50 साल पहले एक आरके मिशन जब यहाँ पे आया था तो यहाँ की सिचुएशन क्या होगी हम समझ सकते हैं। इनफैक्ट अरुणाचल का बर्थ और आरके मिशन नरोत्तम नगर का बर्थ एक साथ हुआ है, तो अरुणाचल की ग्रोथ और आरके मिशन नरोत्तम की ग्रोथ एक पैरेलल और एक दूसरे को एनरिच करने वाली ग्रोथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशंस है, उसको नर्चर करना और उसको प्रिजर्व करना। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के तारीख में आज की जनरेशन की सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी कोई हो तो वो है ये कि हम मॉडर्न बनेंगे लेकिन हमारे ट्रेडिशंस को नहीं भूलेंगे। इसको अगर हम ध्यान में रखते हुए अरुणाचल की अगर हम ग्रोथ करेंगे तो अरुणाचल एक ईस्ट का एक जो सितारा है वो पूरे देश में चमकेगा। स्वामी जी मेरा यहाँ पे बुलाया, धन्यवाद। और मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। ये कोई भी मेरे कुर्सी पे जो बैठा हुआ आदमी है वो कोई भी सिविल सर्वेंट हो वो यही करेगा जो मैंने किया। जो डिफरेंस दो चीज़ों से हुई है, ये आपके ह्यूमिलिटी, आपके हम्बलनेस और आपके काम करने का जो तरीका है और आपका जो डेडिकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, यहाँ के लीडरशिप ने जो एक सेवा भाव नर्चर किया है वो हम लोगों को ड्राइव करता है। बस इतना ही करके मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। My most respected Swamiji, Honorable MP, Honorable MLAs, Commissioner Planning, Commissioner Education, all my respected Swamijis, all my some colleagues are here also, and all my beloved student friends. अभी मेरे पहले ही हमारे कमिश्नर साहब ने बोला है कि एक्चुअली मैं रिटायर हो गया हूँ अप्रैल में। मैं चीफ इंजीनियर PWD का था, तो उस दौरान जो थोड़ा बहुत यहाँ काम भी हुआ है वो तो मेरा एक ड्यूटी था। वो तो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होता है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सरकार की तरफ से मदद मिलता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। हमने पूरी कोशिश की कि उस जितना भी हमें फंड्स मिला उसके अंदर में जो थोड़ा बहुत अच्छा काम हो सकता है वो हमने कोशिश किया। और स्वामी जी को मैंने पहले भी बोला था, ऐसे मैं नरोत्तम नगर का एलुमनी नहीं हूँ, लेकिन मैं आरके मिशन का एलुमनी हूँ। मैं आलोम आरके मिशन से, और आरके मिशन मैं नरेंद्रपुर में भी था। उनकी तरफ से मैं मेरे नरोत्तम नगर के जितने भी एलुमनी हैं आप सबको मैं बेस्ट विशेस देने आया हूँ कि इस 50 years इज ए लॉन्ग जर्नी। हमने भी 2016 स्वामी सुब्रमण्यम महाराज जी यहाँ बैठे हैं। He was our hostel warden way back in 1968-69. I joined आरके मिशन in 1966 as a small child. तो मैं उन सब की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देने आया हूँ। और एलुमनी मीट क्या है? It is just to record your school days. मैं तो चाहता हूँ, बाकी की तरह मैं उपदेश नहीं दूंगा। आप लोग एक शाम और बैठिए, खन दोनों बाबा बन दोनों जगह बन दोनों बंदी तुम्हारे, ये सब गाना भी गाते रहिए। ये भजन गाने में जो एक शांति मिलता है
मैं आज के दिन भी घर में कभी कभी बैठ के, मेरे पास अभी भी है आलों का स्तुति, तो मेरा छोटा भाई पीछे बैठा है नोपश्री, हम लोग पढ़ते थे बोला ना, मैं आज भी पढ़ता हूँ, बड़ा एक शांति मिलता है, काम करने का जज्बा भी मिलता है, एक मेंटल जो पीस मिलता है ना, तो बहुत अच्छा ही रहता है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 3 मिनट का मौका दिया है, नहीं तो बातें करने का तो बहुत है, आज चाहता हूँ कि दिल खोल के बात करूँ, लेकिन एज ए सीनियर फ्रॉम आरके मिशन, आज सुबह भी आरके मिशन एलुमनी का जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सब ने आप सबको इस गोल्डन जुबली के मौके पे आप सबको बधाई देने के लिए मुझे एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा। Once again, I thank all of you. Honorable Chief Minister Sri Pema Khanduji, Honorable Cabinet Minister Mr. Luang, Honorable MP Mr. Tapigao, Honorable Commissioner, Government of Arunachal Pradesh, and respected dignitaries present on the dais, revered Swamijis of the dais, my dear friends, students, and respected guests. Although formally it is being called as a felicitation or recognition of the services being given or offered by somebody like me, I am too little a person, to tell you very frankly, I am too little a person to serve Ramakrishna mission. Serving Ramakrishna mission is serving the God. So whatever I have done within my limited capacity, I have always considered and looked upon those works as my services at the lotus feet of Sri Ramakrishna. I have never considered myself to be the formal auditor or something. Whatever God or Sri Ramakrishna showered on me as a blessing, whatever capacities I had, I just tried to demonstrate all those throughout my career or throughout my association with Sri Ramakrishna Mission Narottam Nagar since 2010. So, revered Secretary Maharaj, it has been very kind of you that you have selected me to felicitate me, although I am not that fit for that, but still I, with humility, accept the recognition that you have formally showered on me today, and thank you all, thank you very, very much. I express my heartfelt wishes, best wishes for the event and the Golden Jubilee celebrations that is on, and I wish it all the best. Thank you very much. Namaste Tiragaya Vivekananda Suraye Sachit Sukaswarupaya Swami Netapaya. Our Honorable Chief Minister and our brother, now Minister Makilwal, and other dignitaries in the dais, and my revered Swamijis and my beloved alumni. I have served here 18 years as the principal of the secondary and higher secondary. Long 18 years I was here. And our Pampal Longdi is my best friend. And his two sons, Litwang and Mantu, they are my students. And almost all the alumni who are sitting there, occupying various positions in the Arunachal Pradesh, they are, almost all of them is my students. So I feel very much delighted to interact with you. Since morning, since yesterday, many students had come to meet me because they thought I had made them man in the true sense of the term. But I am an instrument in the hands of Sri Ramakrishna, Swamiji and Holy Mother. Whatever they have directed me, I have done that to my best of my capacity. I feel myself blessed that I become an instrument
to make you male. Only one thing I shall tell you, 3 minutes time is very short time. Only one thing I tell you, my dear students, my dear beloved students, one sentence of Swami Vivekananda, you remember always, that is, they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. They alone live who live for others. The rest are more dead than alive. So my dear students, you are in high positions in Andhra Pradesh, and take this example that I shall do something for Arunachal Pradesh in particular and for India in general. So all these students are there. Panchal, Luang, who is no more here, you are my students. Then many students are there. If I tell one by one name, then it will take a lot of time. So I recollect some of few students, that is Tani Notum, who is now in Nigrim's eye specialist. I recollect another name, Dr. Tamekina, who is serving in the medical college, Andhra Pradesh. Like that, many are there. If I tell the names, it will be a long history. So please excuse me, my students. When you meet me personally, I shall congratulate you. Only in this meeting, I tell you repeatedly, be unselfish, be unselfish, be unselfish. That is the word of Swami Vivekananda. And practice it, practice it, practice. Thank you all. कैसे शुरू करूं मैं सोचता हूं how I will start my words. First, I offer my best wishes to my brother Swami Achyuta Maharaj, my best wishes to the Honorable CM, best wishes to MP Sahab, MLA, other dignitaries, those who are on the dais and those who are in front of me. सबसे पहले जिसको हमारा बेस्ट विशेष देना चाहिए हमारा स्टूडेंट्स लोग को. Those who are during my period, those who are before my period, and those who are after my period, those who are here, present here, those who are unable to come here, my best wishes to all of my dear students. देखो, मैं सोचता हूँ कि किसका टीचर कौन है. हम तुम्हारा टीचर है ना तुम हमारा टीचर है. हम जो आए थे तुमसे बहुत कुछ सीखा है. सीखने का कोई तरीका नहीं है. हम तो टीचर बन के आया नहीं, इधर आके हमारा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है. कैसे इंस्टीट्यूशन को बच्चा लोग को देखभाल करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ये हम इधर से ही सीखा है. स्वामी जी बोलते हैं ना, एक बात है स्वामी जी का, व्हाट्स एजुकेशन? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. मनुष्य का भीतर जो अंतर्निहित जो देवत्व है ना, उसका परिप्रकाश करना, उसका विकसित करना, वही होता है एजुकेशन. वो काम जो कहते हैं रामकृष्ण मिशन, उसी तरीका में लगा हुआ है. हम लोग शिक्षा देते हैं कैसे बच्चों को बड़ा करना है, उसका भीतर अंदर में जो इनहेरेंट जो उसका भीतर क्वालिटीज है, उसका भीतर जो टैलेंट है, उसको हम लोग कोशिश करता हूँ कैसे वो आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं. एजुकेशन मत क्या है, और इतिहास, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, वो तो तरीका है कि तो उसको सामने रख के बच्चा लोग को अंदर में जो स्पिरिट है उसको ऊपर ले जाना. एक बार बच्चा लोग समझ लेता है जो हम कुछ कर सकता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है. जो समझ लेता है उसका अंतर में आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसको कोई रोक नहीं सकता है. हमारा तरीका यही था तो बच्चा लोग को आगे बढ़ाओ और उसको सिखाओ, बुझाओ, समझाओ. ही इज द जीनियस. वो छोटा मोटा चीज़ नहीं है, उसको सिखाना, आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ा चीज़ है. रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर उसी काम में जुड़ा हुआ है. हमारे इधर में जो स्टूडेंट्स है वो तो आज जो नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, इंडिया का बड़ा बड़ा पोस्ट में वो लोग सर्विस देता है. अरुणाचल का तो बहुत
जो सर्विस है वो IAS IPS ऑफिसर यहाँ से निकल के किया है। तुम जानते हो हमारा इधर में बैठा है, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स सब बैठा है इधर में। हम सबको बधाई देता हूँ। तुम लोग आया है एक अच्युत सरोज जी ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जे अरेंज किया है, इसका एक पार्ट उन्होंने रखा है जे एलुमिनी मीट, एक सबसे बड़ा बात है। तुम लोग आया है, हम लोग वी फील प्राउड ऑफ यू, वी फील प्राउड ऑफ यू। तुम लोग को लिए हम लोग गर्वित हो जे हम लोग स्कूल में पढ़ के किया, लेकिन लोग अभी पूरा अरुणाचल को संभालते हैं, पूरा देश में फैल गया मस्पेट करके किया है। हम जहाँ सुनता हूँ जो हमारा लड़का लोग बड़ा बड़ा पोस्ट में सर्विस देता है, काम करता है, हम अंदर से बहुत खुश होता, बहुत खुश लगता है। जो आज का कुछ बोलने का नहीं है, हम तो हमारा खुश मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इतना खुश हमारा अंदर में आता है, इतना दिल हमारा भर गया है, उसको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। जो भी हो तुम सब लोगों के लिए प्रे करता हूँ, ठाकुर माँ स्वामी जी को पास प्रे भी करता हूँ, तुम लोग को आगे, तुम लोग और आगे बढ़ो, अरुणाचल का शुद्ध नहीं है, देश के आगे बढ़ा के ले जाओ। नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। First of all, I bow down at the lotus feet of Holy Trial. I convey my regard, love, and loving namaskar to Honorable Minister Ramakrishna ji. I have met once. Then I convey my love and best wishes and loving namaskar to Swami Achyutananda ji Maharaj, who has called me, invited me as a alumni. So I am grateful to him. Others, Alumni ji, he is my friend because I have been here long 24 years, almost 50 years का half. इसमें हम 17 to 18 years I had been as a chief warden. From preparatory to class 9 to 10, I looked after them. So I have fully associated with their behavior, with their simplicity is really remarkable for me. And I have told some of my brothers that it was golden time for me to share with the students. Their simplicity is charming me, and I heartfelt thanks. I'm giving thanks to them. Mainly alumni, 50 alumni I have met today, and they have saluted me and offered me like handshake and many of them did their pranam, etc. So really I feel unspeakable joy, and wherever I heard everyone, what you are doing, I am a CEO. What you are doing, I am a dentist doctor. What you are doing, I am government service. So many of them, 80-90% students, they are holding the high position in the society. So really I feel unspeakable joy. And what Swami Vivekananda wanted, service to man is service to God. ये हम लोग का साधन है, क्योंकि 24 साल, 24 years, I did tapasya and get result. I became a secretary of Raja Ramakrishna Math. Because of your blessing, because of your blessing, because of holy trial, I have been given blessing. So, what Swami Vivekananda wanted, let New India arise from forest, from jungle, from hills, from groves, etc., etc. Really, Swami, I am remembering just today, I was remembering Swami Vivekananda's dream was going to be fulfilled. It is fulfilling whatever I saw, because what it was when I came in 1990, then 2014 I became the secretary of Arisha. So lots of change, their behavior, everything. Really, I have met many of the guardians also, local people also. Really, our monks, everyone is saying one thing. Yes, Narottam, Nagar, Arunachal Pradesh. Really, we have did tapasya, and in return we have
learned many things from them. As Sri Ramakrishna said, as long as I live, so long I have to learn. Really, we have also learned from you, because sometimes तो agitation हुआ, कभी-कभी ये भी किया, उधर भी इधर भी तो हुआ है, फिर भी आप लोग से हम भी शिक्षा लिया है, इसीलिए आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को देख के मेरा, जैसे कि हमारा चंदन महाराज बोल कह रहे थे, ऐसी मेरा माफी दिल हो रहा है कि फिर मैं अरुणाचल में आऊँ और फिर आप लोगों की सेवा करूँ। मैं ये ऐसा कैसे सोच रहा था, क्योंकि हमारा जो मैडम जी है, हमारा वांगफालोन जी है, आई मेट हिम, रियली आई फील वेरी, हमारा जो मैडम है, जो वांगफालोन जी का जो बेटा का बहू है, इन सब जो है ना सब परिचित है, इसलिए हम लगता कि ये हमारा ओन होम में आ गया, अपने घर में आ गए। रियली हम आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकूंगा कैसे मैं आनंद में हूँ, मैं खुशी में हूँ, इसलिए हम भगवान से दुआ मांगता हूँ, श्री राम कृष्ण विवेकानंद से दुआ मांगता हूँ, आपका भला हो और भी आप यू आर होल्डिंग गुड पोजीशन इन द सोसाइटी एंड बेटर और भी आगे चलो, लेकिन भूलना नहीं, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ऐसी सेवा करो जैसे रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर का स्थान सबसे ऊंचा होगा। Now is the best school of the Arunachal Pradesh from Narottam Nagar. Really, I feel. So that's why you are alumni, you are beloved students, you are holding position. I pray sincerely at the lotus feet of Bhagwan Sri Ramakrishna, Lord Swami Vivekananda. Bless you all. This is my earnest prayer. Thank you. Honorable Chief Minister, Pema sir, Revered Secretary Swamiji, Honorable Minister, Wakil sir, Honorable MP, Honorable MLAs, Commissioner, Education, all revered Swamijis, and all alumni and current students and friends. It's a very long story, but summing up in 1 or 2 minutes won't be possible. But this morning when I landed up here, first thing I did was I went to my hostel where I stayed in the dormitory. I took my son, I brought my son also, my wife also. I showed them that I was staying for 10 years here. So today is when we celebrate this golden jubilee. For me, the feeling is very nostalgic. Many of the previous Swamijis I might not have met them, but I vividly remember Ramesh Maharaj, who was in RK Mission Hospital in Nagar for quite a long time. I used to meet him. I remember Santosh Maharaj, who was born here. He is no more. When we joined here as class, for me personally, when I joined here as class 2 student, Swami Bhavaharanandaji was the Secretary Swamiji. Next came Swami Brahmathanandaji. They are no more. I was in touch with them, they are no more. Last year, 2 years back only, Santosh Maharaj, he came to Nagar Mission School, he stayed. I went to him, I took him to my house. When I dropped him back, I asked, Swami, next year, which month you are coming? He said, I am not coming. I won't be coming anymore. I said, why? You have been coming every year. He went, after a few months, he died. So, the truthful man, he knew that he won't be coming. And he told me that. We were alone. Anyway, the time is very nostalgic. When I got admission as class 2 students here, in the first batch, many of the wardens, Secretary Swamijis, they are no more. Even my own colleague friends who were my classmates, 50% of them have left for heavenly abode. But I pray to God
for his choicest blessing to my alma mater, RK Mission Narottam Nagar, for growing from strength to strength. Secretary Swamiji had just said 50 years is only a small period in the life of this my alma mater, Narottam Nagar. I wish all the workers, all the Swamijis, Maharaj, and all the current students and all the alumni, best of time, best of interaction here, best of their future life, and wish this school to grow from strength to strength and go a long way in serving our community, our state, and our country. Swamiji said the education is the manifestation of perfection already in man. This is exactly what this institution is doing. Students from villages, raw students are being brought here, they are being policed, they are being trained, disciplined. I am one of them. In this life, whatever I have learned in my life, whatever I tried to become, the very foundation was laid here. And I am happy that I could imbibe the discipline, the humbleness, the humility which was taught here. I tried to carry forward throughout my life, and I do want to say that I remember Ramakrishna, Ramakrishna ji, Swami Vivekananda, Saradamma every day, though I did not necessarily go to a mandir. But I am sure they do bless us, they continue to bless our institution, and I am sure this school has produced a lot of bureaucrats, a lot of technocrats, a lot of public figures, public leaders who have excelled in their own life, in their respective life. I wish everyone very happy celebration, very happy Golden Jubilee function. Thank you so much. Chief Minister, Honorable Member of Parliament, Honorable Minister, Monsignor Sir, Honorable MLS, Commissioner, respected Commissioner Education, revered Secretary Maharaj, all the dignitaries present over here, all the revered Swamijis, my alumni friends, and staff of this institution, and my dear students, my dear children of this institution. I'm drawn in emotion as I stand here and recall my formative schooling days in this esteemed institution. In fact, before the establishment of Ramakrishna Sharda Mission at Ponsa, 25 Nocte girls were selected and admitted in this great institution, and I'm fortunate that I was one of those who got selected, and we got enfolded in the arms of these great souls and the learned teachers. The present SBI at Jubilee town was our hostel. So, beginning in 1971 till today, this great institution has traversed a long journey. And to be very short, like I have to be short, standing here on this auspicious and momentous occasion, I would like to congratulate the RK Mission family and also wish this premier institution to grow from strength to strength. And I, on behalf of all the alumni, would like to express my deepest gratitude and heartfelt thanks to all the revered Swamijis and the learned teachers who have molded and shaped our careers. And I must say that only because of them, today we are what we are today. So like
the formative days of this institution is really nostalgic and has touched my heart today. And also, like, on behalf of all the alumni, would like to thank especially Secretary Maharaj and the whole institution for remembering us today on this auspicious occasion of Golden Jubilee celebration of this great institution. And lastly, I wish everything that can be the best in further days to come for this institution, and also I wish that this institution will produce more of officers, more of good people for the satisfaction of our great souls. Thank you. Good evening everyone. सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जो यहाँ पे स्टेज एंड यहाँ पे सभी आदरणीय जन मेरा नमस्कार स्वीकार करें। 13 years मैं इस स्कूल पे रहा हूँ, तो जब आज आते वक्त बहुत थोड़ा रोना भी आ रहा था और यहाँ आके इतना खुशी हुआ। तो ये जो खुशी जो एक्सप्रेस करने का जो मेरा माध्यम है वो मेरा गाना होगा। तो कृपया करके दिल से सुने, प्यार से सुने। सा नि ध नि ध नि नि ध ध नि सा ग म ग सा सा नि सा ग नि सा नि नि ध नि नि ध ध नि सा ग म सा ग म ग म द ध म ध नि ध नि ध नि ध नि ध नि ध प प द म म प ग ग रे ग म ग प म ग रे। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो ना बोले कृष्ण कृष्ण वो तो जग में हारा। मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण, मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो ना बोले कृष्ण कृष्ण वो तो जग में हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण, मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। Thank you so much. Honorable Chief Minister, Honorable Member of Parliament, Honorable MLA,
the monastic members, my alumnus friend, the senior most leader of Jubilee and in fact Arunachal Pradesh, Sri Ramakrishna. In fact, today's event is a look back moment for all of us. And on this occasion, I just want to share a little bit of input, whichever I know about the starting of this institution. We got admitted in 1972, and in fact this school was a brainchild started by the Lieutenant Governor, Mr. K. Raja, and it was his initiative, and the local leaders at that point of time, our respected Bampa sir, also was very actively involved in the bringing of this Ramakrishna Mission School. And in fact, everyone, like the unsung heroes, many played their own roles, and this institution came into existence. Initially, we were 83 boys, the first batch, and the next, I am told, I don't know how far, is somewhat, when the activities were going on, the meetings were going on for establishing this institution for boys, only for boys. Some Gamburas questioned K. Raja, asking, you are establishing school for boys, but after growing or after getting education, imparting education to these boys, you tell us from where they will marry their wives. That was the question from some GBs. So K. Raja conceived again to bring Sarda mission. So one first batch of Sarda mission was 25 girls. They were attached here as a day scholar, and they used to be lodged there in Jubilee. Now it is a state bank. That was their hostel. So this is how it started, and later on, Sarda mission, Sarda board agreed to come with the institution at Khonsa. So they were shifted somewhere in 74, I suppose. So this is how this institution started. And on this school started from the funding of NBF. NBF means Namsam Bodoria Fund. There was an agreement in 1948 with the government of India. The forest, this forest area, when extracted, some part of the royalty share would be given to the NBF fund. And K. Raja was the trustee of that fund. At that time he was political officer and DC, and later on he became chief advisor to the governor of Assam and finally lieutenant governor. So that NBF fund also played a big role in funding and developing this institution, and also this is a part of Namsam PRF. I would express my great thanks to the chiefs of Namsam and Bodoria for their cooperation in bringing this institution. And again now, if I just recall, here there are many alumni, my friends there.
I don't know how much they have experienced, but I would say I got many new things here. When I got first admitted here, I didn't see, I never saw electricity. I saw it here. And in fact, in effort to collect some electric wire so that I can take to my village, I got electric shock also. I thought I would take one piece of wire and bulb and the switch and fix my village. As simple as that I thought. I never thought there is some type of electricity, current, power, anything like that. So, and I first saw Hindi movie here, movie film here. It was that particular day, the name of the film was Kabuliwala. And it was, what I can say, it was such a surprise for me. And it took me several months to compromise myself. After seeing this movie, one screen was just hanged there and it was projected through a projector. So 83 of us in that hostel hall, when the movie casting started, really everything is moving, they are talking, they are singing, they are running. So I was totally shocked. I thought there might be someone behind that porda. So silently I crawled and touched that porda. I could not find anything. So for 3-4 months I just lost myself imagining, what is this? And first time I saw train through this institution in Narottam, we were taken there to see train. So like that we, my earlier chief warden Ramesh Maharaj, he mentioned kind of meeting point of the old system and some sort of a modernity. It really happened here. And I am one of those examples, of course. Because everything new, the education or everything we got here, we learned here. That's why the Ramakrishna mission has given us a lot. And I would share and request my friend, the alumni, juniors and seniors, everyone, to give back to the institution in our own capacity as far as possible. So that this institution will grow from strength to strength. And in fact, every one of us, I frequently visit here, but many of my friends might not have the chance because they were busy everywhere in their own duties, may not have got a chance to visit this institution time and again. But it is a nostalgic moment for all of us. When we go to the dormitories, when we walk around this campus now, and this hall, in fact, this hall knows us. I feel this hall is acquainted to me, it knows me. The trees around the field knows me. And the rooms, and the roads, everything. So, let us carry forward, conduct ourselves in the service of our state, in our society, to our country, in the way which this institution has taught us. And I have only a wish, a prayer to
Thakur Ramakrishna and my revered Swamijis to bless us so that we can come for centenary celebration also. Today it is Golden Jubilee celebration. I have a wish to attend Gold Centenary celebration. All my golden friends, golden boys we are, and I am one of those because we have achieved Golden Jubilee, so we are golden boys now. Why can't we be centenary boys? A golden boys with silver hair. Let us meet again next centenary celebration. With this wish, I thank every one of you for giving me this time. Thank you. आप सभी को नमस्कार। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर वांकी लोवांग साहब, ऑनरेबल एमएलए, कमिश्नर एजुकेशन, सेक्रेटरी महाराज और रेवरेंड स्वामी जी, आप जितना यहाँ उपस्थित हैं, और आरके मिशन के एल्यूमिनीज यहाँ जितना उपस्थित है, ये मैं दृश्य देख रहा हूँ, गुरु और शिष्यों का मिलन है और मेला है। years कोई सोता मोता नहीं है, ये हाफ सेंचुरी है। हाफ सेंचुरी में आप और आप लोगों ने मिलके साथ में मैं यहाँ का नुक्ते राजा, नुक्ते लीडर, नुक्ते समाज और इस तरह डिस्ट्रिक्ट के जिन लोगों ने के राजा साहब के साथ इस इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाने में और एस्टैब्लिश करने में जिन लोगों ने साथ दिया और जिन लोगों ने आज इस दुनिया में नहीं है, जो स्वामी यहाँ हमको सर्विस देके गए हैं, उसको भी मैं ऊपरवाला को भी यही प्रार्थना करूँगा, उसको भी शांति मिले। मैं आज एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। आरके रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर में मैं भी 12 साल संघर्ष किया हूँ। ये स्वामी जी मुझे क्लासरूम में घुसने नहीं दिया, लेकिन मैं 12 साल यहाँ संघर्ष किया हूँ, इसलिए आज मैं father of one of your alumnis, my son has become doctors also. मैं 12 साल स्वामी जी का चक्कर करता हूँ, इस नरोत्तम रामकृष्ण मिशन स्कूल को मैं चक्कर करता हूँ, इसलिए आज ये अवसर मुझे मिला कि मैं आज I am standing here as a father of one of your alumni of these institutions. सरदा मिशन स्कूल में भी मैं 10 साल चक्कर करता हूँ और यहाँ भी 12 साल करता हूँ। आज these institutions make us realize in the field of education for molding the minds of adolescents and imparting knowledge to another human being is a very big task. विवेकानंद जी ने जो आप लोगों को आशीर्वाद दिया, उस शक्ति से आज हमारा अरुणाचल प्रदेश में, नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, आउटसाइड अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत से इस इंस्टीट्यूशन के एल्यूमिनीज बहुत बड़ा ऑफिसर बन के या अच्छा लीडर बन के जो समाज में काम कर रहा है। इसके लिए मैं स्वामी विवेकानंद से लेके आप यहाँ जितना डिफरेंट स्वामीज और लर्नेड टीचर्स यहाँ जितना उपस्थित है, आप सबको नमन करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये और आगे बढ़े and it should expand like a wave in the ocean. आज हमारा सामने में ये हमारा कहते साहब है, इसलिए मैं बोल रहा था इधर आते समय, अरे नौकरी में था तो ये एल्यूमिनियस
गैदरिंग होना था, रिटायरमेंट का साथ क्यों हो रहा है? लेकिन मैं एलुमिनीज यहाँ जितना उपस्थित है, मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूँ. What our Swamis and the teachers has taught you till the end of your life, you have to exercise their teaching. आज अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा समस्या है, that is drugs. Drugs को we need to educate our younger generations, especially आरके मिशंस के एल्यूमिनियस आज यहाँ जितना उपस्थित है, स्वामी जी का ये वरदान भी मानिए, स्वामी जी का ये आप ये टीचिंग भी मानिए, स्वामी जी का आप इसका डायरेक्टिव भी मानिए. You are spread all over the states, and we all need to take the responsibilities against these drugs maniacs. क्योंकि हमारा बच्चों को, हमारा आने वाला पीढ़ी को बर्बाद जो हो रहा है, इस चीज को आरके मिशन एल्यूमिनियस आज यहाँ जितना उपस्थित है, let us volunteer ourselves to teach the younger generations not to indulge in these activities. मैं आप सभी के सामने में पॉलिटिशियन है, बोलना शुरू कर देगा, ज़्यादा भाषण का कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं यही समाप्त करते हुए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जहाँ जितना आप डिफरेंट स्वामी जी लोग आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और आपका बढ़ाया हुआ बच्चा बाप बन के इधर आज एल्यूमिनीज होकर उपस्थित है, योर ग्रैंडसन्स एंड ग्रैंडडॉटर्स, उसको भी आप लोग ब्लेसिंग दे दीजिए. अरुणाचल का इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आरके मिशंस ने जो एस्टेब्लिश किया है अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल को बनाने में रामकृष्ण मिशन का दाहिना हाथ है. और दाहिना हाथ का पर्दा, you have to take responsibility in the society. I wish and I would like to see our all alumni polarize more and do the social responsibility in the society more than what your Swami has taught during your school days in these institutions. यही मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा. नमस्कार, जय हिंद. Most revered Srimad Swami Achyutananda Ji Maharaj, another very eminent dignitaries present on the dais, other famous monks, another guests and guardians, my dear and beloved students present. I have been asked to speak only a few words, and that too in 3 minutes. Well, I am not an orator, but I shall try my best to illustrate what I have to say. You see, when I am standing at the lectern, a lot of experiences come crowding in my mind. It's very difficult to say in 3 minutes. You know, iceberg, when it floats in the sea, only you see the tip and the rest is underwater, which you cannot see. So, one or two experiences that in the form of tip, I will say here before you, rather to say share before you. Let me crack a joke, because when I was in the classroom, most of you wanted me to speak. Let me show you that I remember some of them. Once Charlie Chaplin, in his early morning walk, suddenly discovered that whoever comes on his way, giving him salute. In fact, he was tired of returning their salutes. And when
that line came to an end, he looked back to see, because it appeared that they were looking not perhaps at him, but someone or something beyond him. So he looked behind and saw there was a great statue of Lenin. So he simply felt ashamed. The same way, whenever I go to any institution, whenever I go to any place, because sometimes because I'm an old teacher, as an old teacher, they invite me somewhere, and sometimes they use words in praise of me. Immediately I remember that Lenin's statue and the Charlie Chaplin. Immediately I remember, definitely beyond me, there is something, and that is this great institution, Ramakrishna Mission, Narottam, Nagar. So I felt really, just like William Wordsworth saying, my heart lifts up when I see a rainbow in the sky. The same way, my heart lifts up when I see the alumni present today, and because I consider myself one of the alumni. Thank you very much. We do not have enough time in our hands, so we have to complete within a quick span of time. My salutations to all illustrious sannyasis, salutations to all ministers on stage, dignitaries on stage, and my beloved students, alumni students, and ladies and gentlemen. I had been working in Baligan Science College, Kolkata, and I used to read the books of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda wrote, if mountain won't come to the Muhammad, then Muhammad must go to mountain. That struck me very well. When I got selected, I remembered that lines. I came over here. I was delighted to see the beautiful surroundings and ecstatic beauty of this nature. And I am privileged to work under 7 illustrious secretary sannyasis, including our present Swami Achyutesananda. I express my gratitude to 3 of my great principals who are present in the house. My pranams to them. And talking about the boys, I proudly proclaim, if I am asked to tell my reaction about the boys, you are really not only brilliant and intelligent, you are honest to the core of your hearts. You are no ordinary people, you are extraordinary people. I can proudly proclaim that one, standing on this stage. Boys, we always try to teach you the good lessons of Indian culture, how to touch the feet of seniors, to show the reverence and respect for seniors. And I was surprised to see that one of our boys, everybody learned that one, but one of our boys, during vacation, when he went to his village, his mother was standing on the road. He got down from the bus and straight away touched the feet of his mother. His mother was surprised. On their way to village, mother inquired, what was the reason for that gesture? The boy said, it is a gesture to show reverence and respect to seniors. Tears rolled down from the eyes of his mother. And that is the great achievement of this Ramakrishna Mission Institution's teachings. It shows, it's a proof that what we teach here, that is rooted
in our Indian culture, Indian tradition, and Indian civilization. Boys, we do not have enough time. When I go back to my memory down the line, a lot of memories come, but as due to paucity of time, I just want to tell you that you all have become eminent persons now. Even then, you are children to us. And it is my suggestion, it is my prayer to you that every day, at least once in a day, you say thanks to the grace and humility of God. Say thank you to the understanding and wisdom. Say thank you to your parents, to your moms, to your teachers, to your friends, and whoever you meet on your journey. Say thank you to all your love and kindness. Say thank you to your peace and prosperity that you have received from this element. With this I conclude.